Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Ambrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार पर नजर डालेंगे। साथ ही हम प्रमुख समाचारों पर चर्चा भी करेंगे। प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे। उदयन, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहले हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Domestic benchmark indices end on a flat note with negative bias. So Sensex slips by 13 points and Nifty sheds 30 points. RBI's Financial Inclusion Index rises nearly 3% for the financial year 2025 and manpower and workforce remain relevant despite new technologies and AI, says Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandavia. घरेलू शेयर बाजार नकारात्मक झुकाव के साथ लगभग बिना किसी बदलाव के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 13 अंक गिरा, निफ्टी भी 30 अंक लुढ़का। रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशी सूचकांक वित्त वर्ष 2025 के लिए लगभग 3% बढ़ा और श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी के बावजूद श्रम शक्ति और कार्यबल हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। और आज की पहली खबर, घरेलू शेयर बाजारों में आज चौतरफा बिकवाली दिखाई दी और उथल पुथल भरे कारोबार में सूचकांक लगभग स्थिर रहे। बाजार का रुख मोटे तौर पर नकारात्मक रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स लगभग 13 अंक यानी 0.02% की गिरावट के साथ 82,187 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 30 अंक यानी 0.12% की गिरावट के साथ 25,061 अंकों पर बंद हुआ। Domestic benchmark indices ended the day flat with a negative bias in a volatile session today. Amid selling across sectors, pairing early gains, the 30-share BSE Sensex fell by 13 points, a 0.02% to settle at 82,187, while the NSE Nifty 50 slipped 30 points, a 0.12% to end the day at 25,061. Broader market indices mirrored the benchmarks, with the BSE Mid Cap Index declining by 0.62% and the Small Cap Index edging 0.17% down at the close of the session. सेंसेक्स सूचकांक में 30 में से 17 कंपनियों में गिरावट दिखाई दी। टाटा मोटर्स का शेयर 2.04%, अडानी पोर्ट्स का शेयर 1.93% और स्टेट बैंक का शेयर 1.12% गिरा। बढ़त दर्ज करने वाले शेयरों में इटर्नल का शेयर 10.56% बढ़ा। दूसरी ओर टाइटन का शेयर 1.08% और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर 0.72% तक बढ़े। In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, barring consumer discretionary, all other sectors ended in the red zone. Among the laggards, realty slipped 1.01%, telecommunications lost 0.87%, and the auto sector shed 0.78%. On the other side, consumer discretionary added 0.22%, while commodities ended flat. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative as shares of 2,231 companies declined, shares of 1,790 companies advanced, while shares of 177 companies remain unchanged. At the National Stock Exchange, 74 companies hit their 52-week high, while 13 companies hit their 52-week low. और विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे कमजोर हुआ। एक डॉलर की कीमत 86 रुपए 37 पैसे रही। दिन के कारोबार के समय
डॉलर सूचकांक 97.83 पर कारोबार कर रहा था। उदयन, शेयर बाजार का हाल आज हमने देखा, कोई ख़ास बदलाव नहीं आया सूचकांक में क्लोजिंग के समय, लेकिन बहुत ही अजीब तरह से बाजार ने आज बिहेव किया। आप कैसे इसको एनालाइज करेंगे? देखिए, दो तीन चीज़ें हो रही हैं। एक तो भारत का अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील के बारे में बातचीत हो रही है, वो एक मार्केट्स उसकी तरफ ध्यान दे रही है, और अभी तक उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स ये आई हैं कि अगस्त 1 तक शायद ना भी हो, तो वो एक अनिश्चितता बनी रहती है। और ये ऐसा जबकि हम भारत के लिए अमेरिकी जो मार्केट है वो उतनी क्रूशल नहीं है जैसे कुछ और देशों के लिए है, फिर भी हमारे यहाँ से काफ़ी निर्यात वहाँ पे होता है। और हमें ये भी याद रखना है कि अमेरिका का जो कंज्यूमर मार्केट है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट है, तो उसका जो पुल होता है वो अपनी जगह होती है, तो वो एक इशू है। दूसरा है कि जो हमारे जो परफॉर्मेंसेस आ रहे हैं, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, और जो प्राइसेस हैं, जो वैल्यूएशंस हैं, उसमें एक सामंजस्य होने की ज़रूरत है। जैसे जैसे अगर कुछ निराशाजनक या पॉजिटिव सरप्राइज नहीं होगा तो फिर उसका एक इम्पैक्ट रहेगा। कमिंग बैक एक पल के लिए अगर ट्रेड डील में वापस आए, कुछ सेक्टर्स हैं जो इम्पैक्टेड हैं, एल्यूमिनियम, स्टील, जो कि हम ट्रेड डील में जब बात कर रहे हैं तो उनके बारे में हम बातचीत नहीं हो रही है, बस साइडवेज दूसरे रिपोर्ट्स में हो रही है, तो वो एक बात है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके उसमें सामने मार्केट्स को इन्फ्लुएंस कर रही है। पर आगे चलते हुए अगस्त 1 में अगर हमें क्लैरिटी मिल जाती है वन वे और दी अदर, वो एक इम्पॉर्टेंट होगा। उसको देख के रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति में ब्याज दरों में कटौती करेंगे कि नहीं, वो एक मुद्दा सामने आएगा। मैं क्यूज़ के बारे में बात करूं जो आगे चल के रिस्पॉन्ड हो सकता है। मॉनसून में का जो स्प्रेड है और उसका जो इम्पैक्ट है वो कैसा रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे पॉजिटिव हेडलाइंस मॉनसून जैसे खबरों से आएगा तो वो उसके आपके ऑटो क्षेत्र में जो एक उम्मीद की जा रही है कि एक हल्का सा उछाल आएगा या उससे ज़्यादा उछाल आएगा त्योहारों के सीज़न में, तो ये सब जो है मार्केट्स इनको का आकलन करेंगी और उस हिसाब से मूवमेंट आप देखेंगे। प्लस जो आपके फेडरल रिजर्व से जो रिपोर्ट्स आते हैं अमेरिकी केंद्रीय बैंक कि वो अपने ये मान के चल रहे हैं लोग कि 2 इंटरेस्ट रेट कट्स वो लोग करेंगे। अगर वो वहाँ पे होता है तो विश्व में चारों तरफ जो केंद्रीय बैंक हैं वो भी उनको फॉलो करेंगे। तो ये कुछ मिली जुली चीज़ें हैं, ये जो सुर्खियाँ हैं, ये आके चल के कई बार क्या होता है, जिस टाइप का मार्केट हमने देखा है, कई बार एक हेडलाइन या फंडामेंटल उसको ड्राइव नहीं कर पाती है, वो वहीं पे आपके स्टेटस को के उधर घूमता रहता है। तो शायद ये वैसा एक दिन था, और आगे चल के जितना इन्फॉर्मेशन आएगा वहाँ पे डायरेक्शन और बेहतर मिलेगा। Value investors are clearly looking at the second quarter results, and today if you look at financial sector, banking for instance, Nifty Bank was down by almost 200 points, but you know Paytm was hogging the headlines in terms of the first quarter results. What about if you look at companies like Nestle India and Tata Consumer Products? You know, if you look at the earning power of FMCG companies, they seem to be robust in terms of sales and revenue, but margins are being affected here. So going ahead and looking at what's happening in terms of the export market, how important is the US-India trade deal which is being negotiated right now? How is the market looking at valuation of the stocks both now and in the future? And of course, if you look at the FII buying into the equity market, it's been negative. They were the net sellers today. Once again, it's the DIIs holding valuations together by being the net buyers. So anyone who's looking at the quarterly results, what would you advise growth investors right now and value investors? So, you know, the interesting thing, I mean, I'll start from right at where you
left off. So what's happening, Arjun, is while some of the things that's happening in the equity market, with the rate cuts being anticipated by RBI, there are now reports that Indian debt might just become reasonably interesting for foreign investors. So that's an interesting sidelight. But let's come to FMCG and consumer kind of products. Yes, it's true, especially in FMCG, in certain areas, the input costs have gone up, and things have not been moving in the kind of way that you would want. But what happens is, Arjun, during such periods like the one we have at the moment, at that point, the end result as an investor, if you ask me, should be to have consistent returns. So what happens is, this is compared to what it was like 2-3 years back when everything was going up, right? So there you would say that, you might be entitled to feel disappointed if your friend were to say that his portfolio growth of his investments was more than yours. But here, what you need to do is, because there's so much of uncertainty, volatility, you would like to aim for consistent return. You might as well not go for the highest possible, but you would want not to have an off day at office as far as investments are concerned, which basically means you are looking at stories which are of established companies. So companies which are large, where how they're going to earn. There's a earnings visibility, the business model, what they spend and what they earn, you are pretty certain. So there are no nasty surprises. For instance, now certain businesses had that, but this, since we are talking about the American, rather India-US trade deal, see, something like pharma used to be a stable play. But Indian pharma companies, for them, exports to the US is a very important component for large companies. So sometimes some of these, templates and playbooks, they don't necessarily work. You can't just do a copy paste. So even as we are talking about large companies and FMCG and pharma being, giving the stability that I was talking about, you probably will need to look at other areas which are doing much better. Okay, sometimes the growth that you want might come from somewhere else. So suppose you wanted some plays in terms of BFSI, you were talking about BFSI, you might be better off looking at, apart from the banks which are doing well, some banks are not doing well, some results haven't been satisfactory. You might look at NBFCs which are blue chip kind of NBFCs or which are doing well, and they're into lines which are not very stressful. Say they are not into microfinance or whatever, where things are not going as well. So maybe those that discernment is required, but the end result is a consistent average. You might not score 100, but you are looking at something which is giving you more than inflation, and it's consistent. My question was that the uncertainty caused by the US policy has clearly affected sentiment in terms of buying into the stock market, and we are seeing the first quarter results right now, and how the second quarters are going to be, again, dependent not only upon domestic consumption but upon exports as well. And if there's uncertainty on that, then that clearly affects the valuation and the earnings of the company. And what would you advise investors right now in the current state of the market? Because there's a lot, not only investment in the cash market, but also in the derivatives market. You have 2 days now, Tuesday and Thursday, and we're expecting a lot of volatility, especially on Tuesdays and Thursdays, because it's the expiry of the derivative contracts also. So how will you advise investors right now, looking at the uncertainty in the economy and the market? Well, if it's a retail investor and everything is becoming too complex for you, then keep it very simple. Now, how can you keep it simple? You say that I'm not going to invest in whatever stocks I've invested. I'm not going to do a mess around right now, because unless you need information and quality information and analysis to invest in high risk investments. So then you say that for this period, fresh investments I will go to mutual funds, and maybe mutual funds like hybrid funds, so like balanced advantage funds, which invest across equity, debt. Okay, so and they dynamically move their composition,
and you can go into multi-asset allocation, multi-asset funds which move across asset classes. So those are the places, because you don't know how the debt is going to do, you don't know how the gold is going to do, you don't know how the equity is going to do. So you might as well say that, okay, I'm going to entrust this to the experts. And if you look at, Arjun, if you look at the performances of this hybrid fund class, you will see that they're doing pretty well. So across this period of volatility, you can take any period of time, you'll find that the results are very consistent. So the key part would be to have consistency. So what I'm trying to say is, you will need a mix. It's like a thali you need. You can't go for a burger or a biryani or something like that. You need a thali. So you need diversification. Yes. My next question is on the US dollar. It's now at 97.83 in the US dollar index, a weak dollar. What does it say about the exchange rate and, of course, the US economy? Very briefly. Well, Arjun, the president out there, US president, wants a strong dollar. But over a period of time, as the information about its fiscal, they're going to spend more and how they're going to earn more. Once that comes, then the dollar is inevitably going to get weakened. So that's the irony of it all. और चलते हैं एशिया के बाज़ारों का हाल जान लेते हैं। एशिया के प्रमुख बाज़ारों में आज मिला जुला रुख रहा। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.62% बढ़ा। हांगकांग शेयर बाजार के हैंगसेंग इंडेक्स में 0.54% की बढ़त दिखाई दी। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.03% बढ़ा। दूसरी ओर दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.27% और जापान के निकेई में 0.11% की गिरावट दर्ज की गई। यूरोप के शेयर बाजारों में दिन के कारोबार के दौरान गिरावट चल रही थी। अंतिम समाचार मिलने तक जर्मनी का डेक्स 1.09%, फ्रांस का कैक 0.84% और लंदन का फुट्सी 0.08% के साथ की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। उदयन, एशिया के बाजारों की अगर हम बात करें तो काफ़ी मिला जुला रुख रहा। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने एशिया के बाजारों को खास तौर से प्रभावित किया? आज सारी खबरें जो हैं वाशिंगटन से ही शुरू होती हैं, सुर्खियां वहीं से निकल रही हैं, डेडलाइन वहीं से बन रही है। और क्योंकि वहां से वो लव लेटर्स गए विद इन कोट्स टैरिफ रिलेटेड, दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट, तो वहां पे भी असर पड़ रहा है। देखिए अब वियतनाम, मलेशिया, तो सारे सब के सब जो हैं वो नेगोशिएट कर रहे हैं और उनके लिए फ़र्क पड़ जाता है क्योंकि कई जगह में है जो जैसे वियतनाम है वो आप पाएंगे कि कई टेक्सटाइल्स वगैरह, गारमेंट्स वगैरह हैं। मलेशिया में स्लाइटली हायर वैल्यू एडेड इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे सामान के बारे में बात हो रही है। तो वो अलग अलग उनके एक्सपोर्ट बास्केट्स हैं और उस तरीके से डील्स हो रही हैं। और इंडोनेशिया का पीछे डील हुआ है, तो वो उससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि वो उनका जो ओरिएंटेशन या तो चीन की तरफ है, उनके साथ तो हुकटअप है, या उनका फाइनल डेस्टिनेशन डेफिनेटली अमेरिकी मार्केट है। तो प्रोडक्शन के लिए वो शायद चीन के साथ जुड़े हुए हैं, शायद नहीं जुड़े हुए हैं, एंड जो फाइनल डेस्टिनेशन वो अमेरिका। तो एक जो मॉडल था ग्रो करने का, रेवेन्यू आमदनी का, वो इम्पैक्टेड हो रहा है। और यूरोप में भी हम देखा कि अभी तक जो हम कारोबार चला, तीनों ही प्रमुख मार्केट नीचे की तरफ ही हैं। देखिए वहाँ पे तो टेंशन चल रहा है क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अगर 1 तारीख तक नहीं होता है उनके साथ डील तो वो काउंटर मेजर्स करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने प्लान बना रखा है, ये हम करने जा रहे हैं। तो ये जब मैं आपको कह रहा था ना, सुर्खियां जो आएंगी आगे, तो वो वहीं से निकल रही हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमने अभी इस बुलेटिन में इतनी देर हमने बात की, बस सारी बातें वहीं उसी एक चीज के आसपास इर्द-गिर्द घूम रही हैं। So speaking about the Asian markets and the direct correlation to their stock market, if you look at the US tariffs, the 14 countries, the initial list of 14 countries on which the second set of tariffs have been imposed include Japan and South Korea. 25% is the tariff plus 10%
is a baseline tariff on them. So, how do you expect the rest of Asia to react to the tariff policy and the market? Very badly, simply because US had existing arrangements. If you have, and which this all I think it was the same president which oversaw those arrangements. Now imagine every 5 years you're changing an arrangement. How on earth can a business person make any plan of making long-term investment? That beats me. I'm sure somebody can explain that to me and to all of us. But see, what also happens, Arjun, is there's an investment cycle. There's also a buying cycle. So people buy at a certain time, they produce at a certain time. So if you're imposing tariffs plumb in the middle of these cycles, what are these people supposed to do? So you will be they're filled up. Internet is filled up with stories as to how people are trying to adjust, and it is not even funny what's going on at the moment. The business cycle that you mentioned. Yes, buying cycle, business cycle, investment cycle, all of it's disrupting practically everything. Let's now have a look at the US markets. Now, US markets closed mostly higher on Monday, lifted by S&P 500 and Nasdaq Composite Index, closing at record highs, following a strong start to the earnings season last week. Meanwhile, investors have continued to track US tariff negotiations ahead of the August 1st deadline. The S&P 500 rose 0.14% to close at 6,305.6, marking its first ever finish above the 6,300 level. The tech-heavy Nasdaq Composite Index gained 0.38% at a record high of 20,974.17. Tesla and Alphabet will release a quarterly results on Wednesday. Meanwhile, the Dow Jones Industrial Average ended the session marginally lower by 0.04% to close at 44,323. What's surprising, despite the uncertainty that we are seeing both in the Asian markets, including the Sensex and Nifty, and of course the US stock markets across its indices, is a level of liquidity. Even though there's a perception of volatility, the actual volatility index is actually quite low. For India, it's less than 11. For the US, it's less than 17. If you look at the specific parameters here, where is all this liquidity coming from? Is it because of the COVID spend by President Biden then, which is causing so much liquidity in the market, and the valuations are still quite high? We don't see the correction despite the uncertainty regarding the US tariff policy. Well, Arjun, that is the most interesting part. If you look at the health, if you were to do a health checkup of the US economy, on most of the parameters, it's doing well. Inflation is not out of hand. Unemployment is not out of hand. Everything that people feared, none of them have got, materialized. You're seeing nothing. But the moment you start looking ahead, then you start feeling nervous, because what's happened was, Arjun, the reason why the inflation was under control, because people who knew that the imports are going to, they're going to be paying tariffs, they front loaded their purchases. So at some point the inventory is going to run out. So there have been a great deal of imports by US companies, yes, ahead of the tariff deadline set exactly by President Trump. I can understand that. But right now the US economy, what is it in terms of the earnings by companies and their fiscal deficit, where clearly they have to service debt payments on US treasuries? That's going up, which means that Asian economies are selling US treasuries in the market. So how do you see the US economy in terms of its earnings and being able to service its debt? Briefly. See, Arjun, because it's so scrambled up, people are still scratching their heads to figure out what. Suppose you're importing things, you're not clear what exactly is going to be the import. How much customs duty are you going to pay? How much of price? How much of passover you're going to do to the customers? And what will happen if you don't? If you decide not to import, what's going to happen? Then you have got these whole global chains. American companies are producing in China. What's going to happen to them? So it's while this is a very pertinent question, but blessed would be the person who has got a finger on the pie, because it's so really complex right now that it's very difficult to answer that question.
Well, let's move on to another headline story now after the US markets. RBI's Financial Inclusion Index, or the FI Index for financial year 2025, has improved and stands at 67% as compared to 64.2% for the financial year 2024. The improvement in the index is largely due to increased usage and better quality, reflecting deepening of financial inclusion and sustained financial literacy initiatives, according to a press release by the central bank today. It added that growth was witnessed across all sub-indices, which include access, usage, and quality. The access parameter reflects how easily financial services are available. The usage parameter indicates how frequently and effectively people are using these services, while the quality parameter includes aspects like financial literacy, consumer protection, and reduction in inequalities and service deficiencies. और श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि नई प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने पर भी श्रम शक्ति और कार्यबल हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। नई दिल्ली में आज तीसरे वैश्विक औद्योगिक संबंध सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि कर्मचारियों के कल्याण के लिए उद्योगों, संघों और सरकार के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार पिछले दशक में 17 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा हुए और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में लगभग 16 करोड़ नए पंजीकरण हुए। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि सरकार का उद्देश्य आने वाले 5 वर्षों में 5 करोड़ नई नौकरियां सृजित करना है। आप क्या कहेंगे उदयन कि जो नई टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद भी जो वर्क फोर्स है वो कितना महत्वपूर्ण है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो फिगर्स हैं वो काफ़ी एनकरेजिंग हमें दिखाई देती है। देखिए, कई चीज़ें, इसमें कोई शक नहीं है कि एआई कई नौकरियों को ख़त्म कर देगा या चेंज कर देगा, पर आपको इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत पड़ेगी, खाना पकाने वाले की ज़रूरत पड़ेगी, जो भौतिक फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको कारपेंटर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको फैक्ट्रीज में फिटिंग करने वाली की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ पे एआई इस्तेमाल हो रहा है, एआई को ओवरसी करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो नौकरियां, कुछ टाइप की नौकरियां चली जाएंगी, पर कुछ टाइप की नौकरियां जो है वो मॉडिफाई हो जाएंगी। जैसे पहले इतनी चिंता हो रही थी कि कंप्यूटर्स आने की वजह से क्या होगा, तो आप देखिए कितनी सीमलेसली वो हमारे लाइफ में उसका इस्तेमाल हो रहा है। मोबाइल फोन का भी उस तरीके से हुआ, तो ऐसे ही कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Let's have a look at the oil market. International crude oil was trading with around 1% loss today amid concerns over the reported escalating trade tensions between the US and the EU that could impact fuel demand. Brent crude was trading 0.95% down at $68.55 per barrel, while WTI crude was 1.07% down at $66.48 per barrel when reports last came in. Once again, the concerns are about the tariff deadline set by the US, and we are seeing that there are OPEC plus production cuts by Saudi Arabia since the month of May. 3 months, production cuts. Iran is into talks right now. What are the supply side pressures right now, and do prices reflect correctly? Arjun, if their plans, the EU-US plans of messing around with the supply from Russia, all the tariffs, etc., if that happens, then these figures are going to really go up. Let's have a look at the precious metals market. In the Indian bullion market, 24 karat gold was trading 1.15% up at 99,950 rupees per 10 grams, while silver 999 fine was trading 0.2% up at 1,15,470 rupees per kilogram a short while ago. और MCX में अगस्त कॉन्ट्रैक्ट वाले सोने की कीमत 0.17% की बढ़त के साथ 99,494 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रही थी, जबकि सितंबर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए चांदी की कीमत 0.15% बढ़कर 1,15,219 रुपये प्रति किलो पर दर्ज की गई। और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। उदयन, इस कार्यक्रम में भाग लेने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। Closing headlines, domestic benchmark indices end on a flat note with negative bias. Sensex slips by 13 points, Nifty sheds 30 points. RBI's Financial Inclusion Index rises nearly 3% for the financial year 2025, and manpower and workforce to remain relevant despite new technologies and AI, says Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandaviya. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
Market Mantra. Market Mantra.